Assalamu alaikum students. Now we are going to start question 4 of exercise 5.3, and the series which is given over here, it's different from the previous series because it's neither arithmetic nor geometric and nor it's arithmetico-geometric series. So here we will use a different method which we have already discussed in the previous video, and that is difference method. So we will use difference method. Difference method means that we will find the difference between the corresponding two terms, consecutive two terms, like a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3, and so on. So if you write a2 and a1, so 5 minus 3, 11 minus 5, and 29 minus 11, which is equal to 2, 6 and 18. Okay, yeah, and so on, right? So the nth term will be an minus 1. Okay, so that will be n minus 1 term. Okay, so since we are adding them, so we can cancel these, right? We can cancel this a2 with this one, because this is minus and this is plus, a3 with a3, and we can cancel this with term over here. Okay, so it will be the only two terms which are left are an and a1, so it will be an minus a1, and if you add them, so it will be 2 plus 6 plus 18 and n minus 1 term. Okay, you can see now this is not an arithmetic series, but this is a geometric series because the common difference is 3. So 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, and so on. So we have a1 is 2, r is 3. So the sum of the n terms will be using this formula, Sn is equal to a1 rn minus 1. Since this is sum of n terms, not infinite terms, so we can find the sum even the value of r is greater than 1, but still, since this is not infinite series, so that's why we can find the sum of n terms and r minus 1. So using this formula we have an, and we can replace a1 with 3, and it will be a1 is 2 over here, r is 3 power n minus 1 divided by 3 minus 1, because r is 3, right? So it will be 2 times 3 power n minus 1 divided by 2. This 2 can be cancelled with this one. Okay, so an will be 3n minus 1 plus 3, which is equal to 3 power n plus 2. Okay, now we have to, this is the nth term. Okay, so nth term is equal to 3 power n plus 2. In this question we have to find the nth term and then sum of n terms, right? So two things are required over here. So that is the first thing we just found. And now we have to find the sum of n terms, so applying some summation on both sides. So sum of an, we can write this ak so that we can have k is equal to 1 up to n, because we will be using n over here, so that's why we are replacing this n with k. Okay, so summation, applying summation on 3n, and k starts from 1 up to n, and we can write this 3k. Okay, and plus 2, and k starts from 1 up to n. So you can see over here that this is a geometric series. Okay, so we can write using the same formula
a1 rn minus 1 divided by r minus 1. So it will be a1 is 3 over here, okay, and r is 3 power n minus 1 divided by 3 minus 1 and plus 2 n, that is ak, okay. So it will be 3 by 2, 3 power n minus 1 plus 2n, okay. So that is the sum of n terms. Okay students, we will have to make some correction because here the terms are n minus 1, so these terms are n minus 1, so here it will be n minus 1, okay, n minus 1, and again n minus 1, n minus 1, and n minus 1, okay. So it will be k minus 1 over here, okay. So and it will be n minus 1 now, okay, n minus 1, okay. So this is the sum of n terms, okay. And over here a1 will be 1 instead of 3 because the first term will be when we put k is equal to 1, so that will be 3 power 1 minus 1, 3 power 0 is equal to 1, so the first term will be 1. So instead of writing 3 we will have to write 1 over here because the first term will be 3 power 0, not 3, so that's why we will write 1 instead of 3. So 1 and 3 power n minus 1 and 3 minus 1, 3 is r, right, r minus 1, so it will be 1 by 2, this is to 1 by 2, 3n minus 1 minus 1, and this 2 can be written over here. So that is the sum of n terms, right. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं. Okay, in question 6 the series which is given, that is 28 plus 32 plus 52 and 152 and so on, using the method of difference because this is not arithmetic, not geometric, and not even arithmetic or geometric series, so that's a different one, and the method we will be using is called method of difference, in which we will find the difference between the two consecutive terms, right. So it will be a2 minus a1 and a3 minus a2 and a4 minus a3 and so on. So जब आप इसको लिखेंगे 32 minus 28 और फिर 52 minus 32 और 152 minus 52, so यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे आखिर में जो टर्म होगा an minus 1 is equal to n minus 1th टर्म, ओके. तो यहाँ पे आप चेक करें, जब आप इसको कैंसिल करेंगे यानी आप इसको ऐड करेंगे तो एडिशन में इसके जो ये प्लस और माइनस वाले टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. ये जो a4 है यहाँ एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा. आखिर में आपके पास a1 और ये रह जाएगा an. तो n में an माइनस a1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 अप टू n माइनस 1 टर्म्स. अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशो हमारे पास क्या है 5. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a1 इज़ इक्वल टू 4, r इज़ इक्वल टू 5, और हमने इसका an टर्म फाइंड करना है. तो फार्मूला हमारे पास है an इज़ इक्वल टू a1. अभी आप देखें r जो है ना वो 1 से ज़्यादा है, तो हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1. मगर यहाँ पे n की जगह पे क्या है n माइनस 1, बिकॉज देयर आर n माइनस 1 टर्म्स इंस्टेड ऑफ n टर्म्स, ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा an माइनस a1 की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 28, ठीक है.
तो an माइनस 28 इज़ इक्वल टू, अब इन सब की जगह पे ये लिखेंगे a1 हमारे पास 4 है, r की जगह पे 5 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 5 माइनस वन, r की जगह पे 5 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे 4 5n माइनस वन डिवाइडेड बाई 4, अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 28 को आप उधर शिफ्ट करें तो an इज़ इक्वल टू 5 पावर n माइनस वन प्लस 28 विच इज़ इक्वल टू 5 पावर n माइनस वन प्लस 27। तो हमारे पास जो nth टर्म यहाँ पे आ गया है वो है an इज़ इक्वल टू 5 power n minus 1 plus 27. This is the nth term of this series. अब इसका सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सम है वो हमारे पास दोनों साइड पे समेशन अप्लाई कर लेंगे, समेशन ए एन एन स्टार बल्कि ए के स्टार्ट्स फ्राम 1 अप टू n, और यहाँ पे जो सीरीज़ बनेगी वो हमारे पास हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 पावर 0, फिर 5 पावर 1, 5 पावर 2 इस तरह और प्लस 27, ठीक है। तो इनका जो सम है इसका जो सम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब का सम, अगर यहाँ पे सम समेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यही फार्मूला दोबारा आ जाएगा। तो a1 हमारे पास क्या है 1, r की जगह पे कॉमन रेशो 5 है तो 5 पावर n और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, फार्मूला ये वाला अप्लाई कर लिया है, ठीक है, और प्लस 27। अब अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे n माइनस वन टर्म है और यहाँ पे मैंने n लिखा है, तो उसकी रीज़न ये है कि nth टर्म में जब a nth टर्म होगा यानी n नंबर वाला टर्म होगा तो यहाँ पे n माइनस वन होगा, और यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स हैं, सम ऑफ n टर्म्स, तो टोटल टर्म्स यहाँ पे क्या है n टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 पावर n लिखा है क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, तो इस टर्म के साथ टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे n टर्म्स हो जाएंगे, और यहाँ पे भी मैंने लिखे 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 27, ठीक है। अगर आप इसके लिए सेम लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, ये भी ठीक है, इस तक भी ठीक है कि ए के सम ऑफ ए के स्टार्स फ्रॉम 1 अप टू n, ये हमारे पास इसका सम ऑफ n टर्म्स है स्टूडेंट्स।